Hello students, in this video we will talk about classification of lipids. Bloor has proposed the following classification of lipids based on their chemical composition. Chemical composition के basis पे ब्लूर ने lipids का classification दिया था. इन्होंने lipids को 3 classes में divide किया, simple lipids या homolipids, compound lipids या heterolipids और derived lipids. Now we'll talk about them one by one. Simple lipids or homolipids are esters of fatty acids with various alcohols. Simple lipids को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रल लिपिड्स एंड वैक्सेस. Neutral lipids are also known as triglycerides. These are esters of fatty acids with a trihydroxy alcohol glycerol. They do not have any free alkaline or acidic group, hence they are called neutral lipids. Fatty acids का जब ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल के साथ कंडेंस करते हैं तो वो कहलाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स. ये 2 तरीके के होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स आर triglycerides having abundance of saturated fatty acids and occurring as solids at room temperature. फैट्स जो हैं इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. Generally, melting point of fats is higher than their solidification point. Oils में unsaturated fatty acids की मात्रा ज़्यादा होती है और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं. Oils are triglycerides having abundance of unsaturated fatty acids and occurring as liquid at room temperature. फिर न्यूट्रल लिपिड्स में या होमोलिपिड्स के अंदर दूसरी कैटेगरी है वैक्सेस. वैक्सेस आर ऑल्सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, बट हेयर द अल्कोहल इज मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल. न्यूट्रल लिपिड्स में ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होती है ग्लिसरॉल, और यहाँ पर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल यानी कि अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज कंपाउंड लिपिड्स और हीट्रोलिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड के साथ यानी कि फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ साथ अगर कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो वो कहलाते हैं कंपाउंड लिपिड्स या हीट्रोलिपिड्स. So these are the esters of fatty acids with alcohol and possess additional group like phospholipid. अब phospholipid में क्या है? लिपिड तो है ही यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो है ही, उसके साथ साथ फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होगा. देन ग्लाइकोलिपिड है तो उसमें लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा. लाइपोप्रोटीन में लिपिड के साथ प्रोटीन प्रेजेंट होगा. So in phospholipids or phosphatids, they are also known as phosphatids. In addition to fatty acid and glycerol, these compounds contain a phosphoric acid, nitrogen base and other substitutes. Then glycolipids contain fatty acids with carbohydrates and nitrogen, and lipoproteins are made up of lipids as well as proteins. Then the third category is derived lipid. अब derived lipid क्या होते हैं? ये simple lipid या compound lipid, इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो कुछ intermediate compounds बनते हैं. These intermediate compounds are known as derived lipids. So these are the substances derived from simple and compound lipids by hydrolysis. These include fatty acids, alcohols, mono and diglycerides, steroids, terpenes and carotenoids. Now we'll talk about them one by one.
First of all, we'll talk about simple lipids. Simple lipids or triglycerides. Triglycerides are the most abundant of all lipids. They constitute about 98% of total dietary lipids. They are the major components of storage fats in plants and animal cells, but they are not normally found in membranes. They are non-polar hydrophobic molecules. Chemically, triglycerides are esters of glycerol with 3 fatty acid molecules. As you can see in the structure, 3 molecules of fatty acids have condensed with a molecule of glycerol. So, 3 water molecules are eliminated and ester is formed. So, it is known as triglyceride. Another characteristic of lipid is that they show optical isomerism. That is, they occur in 2 optical forms D and L. That is dextrorotatory as well as levorotatory, which are mirror images of each other. अब अगर फैट मॉलिक्यूल में तीनों फैटी एसिड्स सेम ही हों तो इस तरीके के फैट्स कहलाते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ट्राइग्लिसराइड्स. A fat molecule containing a single kind of fatty acids in all the 3 positions are called simple or symmetrical triglycerides. For example, tripalmitin and tristearin. As you can see from the structure, both tripalmitin and tristearin have all the 3 fatty acids which are similar. Now, most of the triglycerides in nature are mixed or asymmetrical triglycerides. That is, they contain 2 or 3 different fatty acids units in the molecule. Some examples of fats: animal fats. Example is butter, pork fat, beef fat, and chicken fat. Plant fats include olive oil, groundnut oil, and soybean oil. Most animal fats, such as those from meat, milk, and eggs, are relatively rich in saturated fatty acids, but contain a rather low content of polyunsaturated fatty acids, except chicken and fish fat. जो एनिमल फैट्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं. The large proportion of saturated fatty acids, especially palmitic and stearic acids with high melting point, confers solid state to the animal fats. Animal fats में ज़्यादातर जो palmitic और stearic acid होते हैं, saturated fatty acid ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से उनका melting point ज़्यादा होता है और इसीलिए वो solid form में present होते हैं. On the other hand, plant fats contain a large proportion of unsaturated fatty acids. Plant fats में unsaturated fatty acids ज़्यादा होते हैं, especially polyunsaturated fatty acids, that is PUFA, which is a very common term used now. The unsaturated fatty acids have low melting point and confer liquid state to the plant fat. जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट वैक्सेस. वैक्सेस आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल. होते तो यही हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जैसा कि हमने अभी पहले भी बात की थी, ये बहुत लंबी लॉन्ग चेन अल्कोहल होती हैं. इनमें नंबर ऑफ कार्बन इज वेरी लार्ज. द फैटी एसिड्स रेंज इन बिटवीन C14 एंड C36. जो फैटी एसिड हैं वो भी काफ़ी
लंबी चेन वाले होते हैं जिनमें कार्बन का नंबर 14 से लेके 36 तक हो सकता है. एंड अल्कोहल्स ऑल्सो कंटेन लॉन्ग चेन्स. their number of carbon ranges from 16 to 36. Example of waxes are carnauba wax, which is the hardest known wax, consists mainly of fatty acids esterified with tetracosanol and tetratriecontanol. फिर दूसरे एग्जाम्पल हैं बीज वैक्स और स्पर्मेसिटी वैक्स. आप ये देख सकते हो स्ट्रक्चर में कि कितना लंबा इसमें हाइड्रोकार्बन चेन है. Now we'll talk about compound lipids. First of all, we'll talk about phospholipids. As we have already discussed that these phospholipids, they contain phosphorus in addition to lipids. These are the most abundant membrane lipids. They serve primarily as structural components of membranes and never stored in large quantities. They contain phosphorus in the form of phosphoric acid groups. They differ from triglycerides in possessing usually one hydrophilic polar head group and usually two hydrophobic non-polar tails. ये डिफरेंट किस ट्राइग्लिसराइड से डिफरेंट कैसे होते हैं कि एक तो इनमें हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है और दो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स होती हैं. For this reason, they are often called polar lipids. They are amphipathic. In phospholipids, two of the OH groups in glycerol are linked to fatty acids, while the third OH group is linked to one phosphoric acid. 3 OH ग्रुप होते हैं ग्लिसरॉल में, जिसमें 2 OH ग्रुप तो फैटी एसिड के साथ लिंक हो जाते हैं और जो थर्ड है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ लिंक हो जाता है. और ये फॉस्फेट जो है ये फिर वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस के साथ लिंक होता है. Now phospholipids are further classified into various categories. First of all is phosphoglycerides. These are the major phospholipids found in membranes and contain two fatty acid molecules or tails esterified to the first and second OH group of glycerol. The third OH group of glycerol forms an ester linkage with phosphoric acid. In addition, these contain a second alcohol which is also esterified to the phosphoric acid. This is referred to as head alcohol group as it is present at one end of the long phosphoglyceride molecule. The various phosphoglycerides differ in their head alcohol groups. अलग अलग जो phosphoglycerides हैं उनके head alcohol में difference होता है. All of them contain two non-polar tails, each consisting of a long chain, either 16 or 18 carbon chain. Examples are lecithin, which are also known as phosphatidylcholine. Various oilseeds like soyabean and yeast are important sources from plant world. These are required for normal transport of other lipids, especially in the liver of animals. Then cephalins, plasmalogens, which are also known as phosphoglycerol acetals. Then phosphoinositides or phosphatidyl inositol. They are present in brain tissues and soybean. They are of considerable importance because of their role in transport processes in cells. They have one glycerol, fatty acid, phosphate and inositol. Then thirds are phosphosphingosides or sphingomyelins. It is commonly found in nerve tissues, especially in the myelin sheath of the nerve and apparently lacking in plants and microorganisms. The glycerol is replaced by phytosphingosine in plants and sphingosine in animals. ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कि 2 OH ग्रुप जो हैं ग्लिसरॉल के ये फैटी एसिड से जुड़े हुए हैं और थर्ड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा हुआ है और फॉस्फोरिक एसिड फिर कोलिन से जुड़ा हुआ है.
फॉस्फोआइनोसिटाइड्स में आइनोसिटॉल है। स्फिंगोलिपिड्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। Then next are glycolipids, which are also known as cerebrosides or glycosphingosides. These are important constituent of brain. As the head group consists of one or more sugar units, they are often called glycosphingosides. They contain a high molecular weight fatty acid, sphingosine or N-acetylsphingosine, and either galactose or glucose. They have no electric charge. The name ceramide is used to designate fatty acid portion of the cerebrosides. Gangliosides are found in significant concentration in ganglion cells of nervous tissues. Then sulfolipids, these are glycolipids containing sulfur and widely distributed in plants. It is localized in chloroplast and also present in chromatophores of photosynthetic bacteria. Then sulfatides, a sulfate ester is present in white matter of brain. Now we'll talk about glycolipids. हमने बात की ग्लाइकोलिपिड्स की, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के और सल्फोलिपिड के. Now the last category is derived lipids. It includes the hydrolysis product of simple and compound lipids and also various other compounds having structure resembling lipids such as sterols, terpenes, carotenoids, fatty aldehydes and ketones, etc. This is the structure of carotenoid and this is the structure of cholesterol. This is the hydrocarbon side chain, a steroid nucleus and a hydroxyl group. So I hope student you have understood the classification